Chalo, let's start with the final revision for the exam. We start chapter wise. So we're looking at cell and cell division as the first chapter. So first one is the logical sequence. So if you see the logical sequence, you're looking at, you start with G1 phase. So G1 will be first, G1 will be followed by S will be followed by G2. G2 will be followed by karyokinesis, which will be followed by cytokinesis. So on this slide, you can revise what are the phases. G1, S, G2, karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis we know is process of division of nucleus. Cytokinesis is process of division of cytoplasm. G1 phase में RNA and proteins are produced. Mitochondria and chloroplast, which have their own DNA, they duplicate. S phase में it is duplication of DNA that we are looking at. So duplication of DNA is occurring in the S phase. So when you're looking at duplication of DNA, this one single structure is one chromosome and it is duplicating. So now it has got two chromatids. This is also the diagram for a duplicated chromosome. Karyokinesis we know is four stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Cytokinesis is division of the cytoplasm. This cytokinesis, when it is occurring in the plant cell, it is by the process of cell plate formation. When it is occurring in the animal cell, it is by the process of furrow formation. Most commonly asked is S phase ka significance, synthesis phase ka significance. This is again prophase, first one, followed by metaphase, followed by anaphase, followed by telophase, followed by cytokinesis. Every time you have a diagram for prophase, you should look out for the disappearing nuclear membrane. That is your identification feature. If it is metaphase, you should look out for chromosomes aligned at the equatorial plane. So at the equator of the cell, you will find chromosomes. If you're looking at anaphase, then you're looking at chromosomes which have divided as V or L-shaped patterns of chromosomes on either side. And if you're looking at telophase, you're looking at opposite of prophase, which means you will see two nuclei over there. You will see a depression in the constriction of the cytoplasm, reappearing nucleolus, chromosomes uncoiled to form chromatin fibers. Function of centrosome. So if this is your animal cell, this is the nucleus, the line and the dot is the centriole, and these are the asters. This is the centrosome. Its location is cytoplasm of the animal cell near this cell organelle, which is called as the nucleus. And its function is to initiate and regulate cell division in animal cell. Another function you can remember is formation of spindle fibers during the process of cell division. Spindle fibers will attach to the centromere and they will help in movement of chromosomes during cell division. When they ask you to draw a duplicated chromosome, this is the centromere. This is one chromatid here. This is the other chromatid. One vertical half is one chromatid. This is the centromere. Make sure you give the title. Remember, this one entire thing is one chromatid. So these are two chromatids. सेंट्रोमियर है ना ये, तो सेंट्रोमियर का लोकेशन इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इन अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. This and this chromatid is called sister chromatid. Why? Because it is this and this. This and this is called sister chromatid because it is attached to the same, because it is belonging to the same chromosome. Centromere का function पूछा तो you can write attachment of sister chromatids in a duplicated chromosome, or you can write spindle fibers attached to it. Karyokinesis we've already explained is division of nucleus. Cytokinesis is division of cytoplasm. Difference also we've seen. Cytokinesis plant cell furrow formation. No. Cytokinesis plant cell plate formation, sorry. And cytokinesis animal cell furrow formation. Distinguish between mitosis and meiosis based on the chromosome number of daughter cells. So mitosis में 2 daughter cells, meiosis में 4 daughter cells. Mitosis is the equational division. Why is it equational? Because in mitosis, the chromosome number of the daughter cell is equal to the parent cell. Daughter cell is equal to the parent cell in mitosis, and daughter cell is half of the parent cell in meiosis. इसलिए mitosis को बोलते हैं equational division, which helps in growth, repair, healing, reproduction in lower organisms. And meiosis को बोलते हैं reductional division. It reduces the chromosome number to half in the daughter cell, which is restored during the process of fertilization.
ये वाला गिव रीजन 2 मार्क का. Gametes have haploid number of chromosomes. Haploid in this case means half. So if diploid 2n, diploid is written as 2n is equal to 46, then haploid half n is equal to 23. Gametes are haploid. Why are gametes haploid? Because gametes are produced by meiosis. ये जो meiosis होता है, this reduces the chromosome number to the half in the daughter cell. And ये जो chromosome number half in the daughter cell होता है, this gets restored. When does it get restored? It gets restored during the process of fertilization. तो ये हो गया आंसर फॉर गेमीट्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस इज प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स. अच्छा, अगर प्लांट में हुआ तो इट कैन अकर इन दी ओवरी, इट कैन अकर इन द एंथर. ओवरी में एग सेल को बनाने के लिए और एंथर में पोलन ग्रेन को बनाने के लिए. अगर एनिमल्स में हुआ तो स्पर्म बनाने के लिए इन द टेस्टिस या फिर ओवम बनाने के लिए इन द ओवरीज. अगर पूछा माइटोसिस इन प्लांट सेल कहाँ होता है, तो माइटोसिस इन प्लांट सेल के लिए मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट, वेयर इट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ये वाला प्रोफेस है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई? बिकॉज यू सी दिस डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज अ प्लांट सेल, क्योंकि आप देखो यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड द सेंट्रियोल. इज इट अ प्लांट और एन एनिमल सेल? सो इट इज अ प्लांट सेल. रीजन इज सेल वॉल इज प्रेजेंट, या फिर रीजन इज सेंट्रियोल इज एब्सेंट. What is the stage shown here? So we've seen that the stage shown is prophase. Prophase के बाद next stage क्या आता है? Metaphase. How do you identify metaphase? All chromosomes are aligned at the equatorial plane of the cell. ठीक है, equatorial plane of the cell. Fourth वाला is repeat. Next. Now you see this stage, this is anaphase. So if you see this as anaphase, remember when you're drawing anaphase, the centromere that is there is always facing towards the poles, and the arms of the chromosomes are facing towards the equator. Or remember, as we had learned, the dot faces the dot of the centriole faces the dot of the centromere. Identify the stage. तो आधा दिखेगा एंड अवे दिखेगा, तो इट विल ऑलवेज बी एनाफेज. तो ये वाला आधा है ना बेसिकली. गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो रीजन टू सपोर्ट योर आंसर में centromere divides and chromatids move to opposite poles due to contraction of spindle fibers. फिर name the parts labeled A, B and C. तो A, if it is pointing to the circle as we can see here, then A will become the centriole. B is the spindle fiber and C becomes the chromatid. What is the chromosome number of the cell shown? So you can see जितना centromere दिखता है उतना chromosome number you can write. Draw a diagram of the stage as it would appear. Next, तो ये क्या है? Anaphase. Anaphase के बाद telophase आता है. तो दो nuclear membrane. This is the nucleolus 1, 2, 3, 4 here. 1, 2, 3, 4 here. This is the cytoplasmic constriction. You draw your centriole over here, surrounded by asters. No spindle fibers. Spindle fibers prophase में बनता है, telophase में disappear होता है. This is your telophase diagram. So one over here is chromatin fiber or chromatid also. If you see, 2 over here is reappearing nuclear membrane. जब यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखेगा तो द फेस आइडेंटिफाइड इज योर, द दो न्यूक्लियस दिखेगा तो फेस आइडेंटिफाइड इज टीलोफेस. तो आइडेंटिफाई द स्टेज. सो द स्टेज आइडेंटिफाइड इज टीलोफेस. रीजन इज reappearing nuclear membrane and nucleolus. We've already labeled. Technical term for the division of the nucleus is called karyokinesis. What is the stage that comes before the stage shown here? ये टीलोफेस है तो इसके पहले आता है एनाफेस. तो एनाफेस बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक साइड पे you will have to draw 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chromatids you will have to draw like this on each side. ठीक है, दूसरे साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which is the cell division that results in half the number of chromosomes in daughter cells? So meiosis reduces the chromosome number to half. अब ये वाला जो डायग्राम है ये डीएनए के लिए है. सो यूर बेसिकली लुकिंग एट ए न्यूक्लियोटाइड. तो 1 जो है दैट इज फॉस्फेट. 2 जो है दैट इज योर पेंटोज शुगर विच इज योर 5 कार्बन शुगर. 3 जो है दैट इज योर नाइट्रोजिनस बेस. 4 जो है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड 5 जो है दैट इज योर करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजिनस बेस. खाली नाइट्रोजिनस बेस लिखेगा तो भी चलेगा. ये जो 1, 2 एंड 3 है इसको साथ में वी कॉल न्यूक्लियोटाइड. Nucleotide is the repeating component of DNA.
It is a complex made up of pentose sugar, मतलब 5 carbon sugar. So you can see 1, 2, 3, 4, 5 pentagon. So 5 carbon sugar, phosphate group and nitrogenous base. How many nucleotides are seen in each strand? अच्छा, how many strands? देखो ये एक vertical line होता है, ये एक strand होता है, ये एक strand है, तो दो strand है डायग्राम में और हर strand में दो न्यूक्लियोटाइड है. नेम द डीएनए यूनिट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 1, 2 एंड 3. इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड इज द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ डीएनए. ये होता है इसका पेंटोज शुगर, ये होता है इसका नाइट्रोजनस बेस, ये होता है इसका फॉस्फेट. This is crossing over का diagram. Crossing over is exchange of genetic segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes. What are homologous chromosomes? Pair of chromosomes which are equal in size and shape, one from each parent. In which type of cell division does crossing over occur? So crossing over occurs in meiosis and it produces variations. Significance पूछेगा तो crossing over produces variations. What is the point of crossing over? तो ये वाला point पूछेगा तो this point is called as chiasma. ये जो variations बनता है, these serve as the raw material for evolution. DNA का full form is deoxyribonucleic acid. DNA. DNA is the chemical which makes up the gene. Genes are units of heredity. Chromosomes are carriers of heredity. 4 nitrogenous bases. Very important question. 4 nitrogenous bases में एक होता है adenine, दूसरा होता है guanine, तीसरा होता है cytosine और चौथा होता है thiamine. Adenine, guanine, cytosine and thiamine. Carriers of heredity बोलेगा तो chromosomes. Remember, chromosomes are seen only during cell division. बाकी सब time they are present as chromatin fiber. What is the chromosome made up of? It is made up of DNA and histone. What is the histone? The histone is a protein. What is its function? Histones help in packaging of the DNA. DNA is negative, histone is positively charged, so it helps in packaging of DNA. What forms the rungs of the DNA ladder? देखो ये rungs है, तो nitrogenous base and the hydrogen bonds in between form the rungs of the ladder. ये जो DNA structure है, इसको बोलते हैं double helix. And ये double helix structure was proposed by the scientist Watson and Crick. So name of scientist is Watson and Crick. What is the composition of a nucleosome? So nucleosome, if you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 histone proteins. And on this core of 8 histone proteins, 1/3 turn of DNA or basically strand of DNA wraps around. A nucleosome is a complex which is made up of a core of 8 histone proteins. And on this core of 8 histone proteins, the DNA strand wraps around. DNA strand wraps around. ठीक है. Longest phase in cell division पूछेगा तो prophase. Longest phase in cell division is prophase. अगर पूछेगा shortest phase in cell division तो anaphase. Best viewed chromosomes तो metaphase. Longest phase in cell cycle पूछेगा तो interphase. Interphase is basically your resting phase. Outwardly it looks like nothing is happening, but internally the cell is preparing for next division. Look at genetics. The type of gene which in presence of contrasting allele is not expressed. Not expressed का मतलब होता है recessive. The condition in which both alleles are identical. मतलब क्या? Small r या small t या small a या capital A. This is one allele, this is another allele. If the alleles are identical, the condition is called homozygous. The allele which expresses itself on the other. Capital A, small a में capital A will express because capital A is dominant. So dominant is the one which expresses itself on the other. After mitotic cell division, a female human cell will have, ठीक है, पहला है तो mitosis, मतलब chromosome number will remain the same. Total number of chromosomes होता है 46. 46 मतलब होता है 23 pairs. तो अगर इसको डिवाइड करेगा मेल में तो 22 pairs प्लस XY एज पेयर्स होगा. ठीक है. अगर इसको 46 की तरह लिखना है तो 44 प्लस XY
ये होता है मेल में आफ्टर माइटोसिस, एंड 44 प्लस XX ये होता है फीमेल में आफ्टर माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। अच्छा, अब अगर पूछा मियोसिस में, तो यही जो 44 प्लस XX है ये चेंज हो जाता है 22 प्लस X में या फिर 22 प्लस Y में। स्पर्म्स, हाफ स्पर्म्स have X chromosome, the other half have Y chromosomes, और ये 44 प्लस X जो है ये चेंज हो जाता है 22 प्लस X में। तो सेम, तो ऑल X सेल्स have only X क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल ह्यूमन सेल माइटोसिस के बाद XY तो मेल में होता है, तो ये आंसर नहीं है। Y भी मेल में होता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, बट ये वाला जो है ये मियोसिस के बाद होगा, क्योंकि ये हाफ है, बट इसमें ये वाला भी हाफ नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज द आंसर। होमोजाइगस का मतलब होता है एलील्स आर आइडेंटिकल with the condition in which the alleles are identical, मतलब कैपिटल टी होमोजाइगस हो गया, एंड एलील्स आर नॉन आइडेंटिकल मतलब कैपिटल T हेटेरोजाइगस हो गया। टाइप्स ऑफ गेमीस्ट, अब अगर कैपिटल टी है तो आधा गमीट कैपिटल टी, दूसरा आधा भी कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट इज प्रोड्यूस्ड। अगर हेटेरोजाइगस है कैपिटल टी, आधा गमीट कैपिटल टी, आधा गमीट स्मॉल टी, मोर देन वन टाइप ऑफ गेमीट इज प्रोड्यूस्ड। जीनोटाइप, internal genetic constitution of an organism, internal genetic constitution of an organism। phenotype, external observable character, external observable character which is genetically controlled, external observable character which is genetically controlled is called as the phenotype। ओके, वर्किंग करने का टाइम नहीं है, बट आई टेल यू हाउ यू रिमेंबर। पहले साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट ऑन विच ही कंडक्टेड इज पाइसम सैटिवम, pea plant। Why did he choose this pea plant? It has a short lifespan, multiple generations can be studied in a small period of time, flowers are large, naturally self-pollinated, artificially cross-pollinated, different varieties were available। ठीक है, पहले जब ये क्वेश्चन आए तो चार अल्फाबेट लिख लो, आपको चार अल्फाबेट दिया हुआ है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अगर जीनोटाइप है तो जीनोटाइप इज वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अल्फाबेट। वर्किंग चाहिए तो नोटबुक अपना रेफर करो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दिस बिकम्स द जीनोटाइप। जीनोटाइप में खाली अल्फाबेट्स लिखने हैं। डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है आपका? 9:3:3:1। तीन रेशियोज लर्न करने हैं। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक 3:1, मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक 1:2:1, डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक 9:3:3:1। ठीक है। अच्छा, इसका फिनोटाइप क्या होगा? जो 9 होगा वो आपका डोमिनेंट पेरेंट होगा। क्या था आपका डोमिनेंट पेरेंट? राउंड एंड येलो। तो 9 will become round and yellow. So round and yellow seeds। बीच का 3 लिखेंगे और 3 लिखेंगे और 1। अब ये जो 1 होगा ये होगा आपका रिसेसिव पेरेंट। आपका रिसेसिव पेरेंट क्या है यहाँ पे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये जो बीच के दो होंगे इट विल बी अ क्रॉस। सो राउंड आपने येलो के साथ लिखा, तो अब राउंड आप ग्रीन के साथ लिखो। सो नेक्स्ट 3 विल बी राउंड एंड ग्रीन। सो थर्ड विल बी राउंड एंड ग्रीन। और ये जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है, आपने व्रिंकल को ग्रीन के साथ लिखा, आप रिंकल्ड को येलो के साथ लिखो। तो व्रिंकल्ड विल गो विथ येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो। नेम एंड स्टेट द लॉ विच एक्सप्लेन्स द डाईहाइब्रिड रेशियो। तो डाईहाइब्रिड के साथ हमेशा द लॉ विल बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यू कैन रीड एंड लर्न द लॉ फ्रॉम योर बुक। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ सेज when there are two characters, the distribution of the alleles of one character into the gametes is independent of the distribution of the other। It is actually because of the law of independent assortment कि ये जो नए वाले non parental combinations हैं they get formed। Write the possible combination of gametes from the F1 hybrid। क्या है आपका F1 hybrid? कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, 1 2 3 4। बहुत सारे MCQ questions also you will see they are speaking about gametes। So you have to write the genotype, then one goes with 3 as we had done in class, capital R, capital Y, then one goes with 4, capital R, small y, then 2 goes with 3, small r, capital Y, and 2 goes with 4, small r with small y. Combination of gametes. Next.
In a certain species of animals, black fur is dominant over brown. So both parents are heterozygous. Capital B, small b crossed with capital B, small b. Animal या humans में crosses are only till one generation. यहाँ पे capital, यहाँ पे small, यहाँ capital, यहाँ पे small. Then you put it in the Punnett square. Capital B, small b, crossed with capital B, small b. Capital with capital, capital with small, and small with small. तो कैपिटल बी जो है दैट विल अपीयर ब्लैक, क्योंकि इसके पास दोनों कैपिटल बी है. कैपिटल बी स्मॉल बी है दैट विल ऑल्सो अपीयर ब्लैक, बिकॉज इसके पास भी एक कैपिटल बी है. कैपिटल बी स्मॉल बी थर्ड दैट विल ऑल्सो अपीयर ब्लैक, बट स्मॉल बी विल अपीयर ब्राउन. तो अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो 3:1, और जीनोटिपिक पूछेगा तो इट इज गोइंग टू बी 1:2:1, where 1 will represent what? Capital with capital, 2 will represent capital with small, and 1 will represent small with small. Next. ये वाला भी डाई हाइब्रिड है, ठीक है. ये वाला भी डाई हाइब्रिड है. वी आर अगेन लुकिंग एट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ F1. तो जीनोटाइप ऑफ F1 का आइडिया सिंपल होता है. जीनोटाइप ऑफ F1 में यू राइट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अल्फाबेट. एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी, एक कैपिटल आई, एक स्मॉल आई. फिर फिनोटाइप में यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट. तो जीनोटाइप में जो कैपिटल है वो एक्सप्रेस करेगा, तो ये कैपिटल जी एक्सप्रेस करेगा मतलब ग्रीन पॉड्स, और कैपिटल आई एक्सप्रेस करेगा मतलब इन्फ्लेटेड पॉड्स. तो फिनोटाइप में वी विल राइट ऑल प्लांट्स हैव green and inflated pods. ग्रीन बिकॉज कैपिटल जी ग्रीन है, कैपिटल आई इन्फ्लेटेड है तो इन्फ्लेटेड. फिनोटिपिक रेशियो सेम है, 9:3:3:1. पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गमीट्स भी सेम है. कैसे लिखते हैं? कैपिटल जी, कैपिटल आई, स्मॉल आई. 1 goes with 3, capital G, capital I. 1 goes with 4, capital G, small I. 2 goes with 3, small g, capital I, and 2 goes with 4, small g, small I. Mendel's law of segregation, or segregation, is also called as purity of gametes. Two members of a pair of factors separate during gamete formation. Fifth वाला repeat है. Okay, अब ये कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया, नॉर्मल मेल. कैरियर फीमेल हीमोफीलिया है, फीमेल इज XX, कैरियर मतलब एक पे लिखना है. नॉर्मल मेल, मेल इज XY. नॉर्मल है तो कुछ नहीं, इसको सेपरेट करके यहाँ लिखना है XH, यहाँ लिखना है X, यहाँ लिखना है X, यहाँ लिखना है Y. पुट इट इन द पनेट स्क्वायर. 1 2 1 2. यहाँ पे लिखा है XH, यहाँ पे लिखा है X, यहाँ लिखा X, यहाँ लिखा Y. XHX कैरियर फीमेल, नीचे लिखना कैरियर फीमेल. XHY affected male. XX unaffected female. XY unaffected male. Make sure that you define the 4 below. Defects like color blindness and hemophilia are far more common in males than in females. Okay. 2 mark का give reason. So first you should know that such diseases are X-linked recessive disorders. ये हो गया एक marking point. दूसरा marking point क्या है? Males. What is the male का genotype? XY. Males have only one X chromosome. If the gene is present on the X chromosome, it will express. क्योंकि corresponding दूसरा वाला X है ही नहीं, दूसरा वाला Y है. Y पे तो gene होता ही नहीं है. And females have 2 X chromosomes, X and X. There is always a probability that a dominant gene on one X chromosome does not allow the recessive to express. ठीक है? So defects like color blindness and hemophilia are far more common in males than females, because color blindness and hemophilia are X-linked recessive disorders. Males have XY or only one X chromosome. So if the gene is present, it will express itself. Females have 2 X chromosomes. There is always a possibility that a dominant gene on one X chromosome does not allow the recessive to express. अच्छा, एक इसमें म्यूटेशन वाला डेफिनेशन. म्यूटेशन में सडन हेरिटेबल चेंज. सडन हेरिटेबल चेंज. अच्छा, ये सडन हेरिटेबल चेंज किसमें है? इन 1 or more genes, or what? In the number or structure of chromosome. So sudden heritable change in 1 or more genes or in the number or structure of chromosomes. अच्छा, दूसरा इसमें एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन, उसमें आपने सीखा था सिकल सेल एनीमिया.
सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप गेट्स ऑल्टर्ड, sickle cell anemia. Okay, so these are the first two chapters.